पर्टिकुलर लिबरल वर्ल्ड व्यू, क्योंकि उनके अगर टॉप इंटेलेक्चुअल्स को देखें, आप उनके टॉप फिलोसोफर्स को देखें, एंड देन अगर आप उनके जनरल पब्लिक को देखें, दे हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट. सो फॉर एग्जांपल, जस्ट इफ यू गिव अ गूगल सर्च, तो पीटर सिंगर, ही इज एन एथियस्ट फिलोसोफर और बायोएथिसिस्ट भी हैं, मतलब कि वो मोरल फिलोसोफर्स हैं. तो वो ही ओपनली सपोर्ट्स नेक्रोफिलिया, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. ही आल्सो सपोर्ट्स किलिंग वन ईयर ओल्ड बेबीज. रिचर्ड डॉकिंस ओपनली सपोर्ट्स माइल्ड पेडोफिलिया एंड इंसेस्ट. इस तरह प्रोफेसर क्राउस, वो भी उन्होंने ओपन कहा था कि आई सपोर्ट इंसेस्ट वगैरह. सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक इमेजिन अ मुस्लिम being outraged at people who are going to mosques. Like this is as outrageous. So fine, like That's very, very which true. is why which is why That's very true. Can I yeah, sorry. क्विकली मैं आपकी बात में सिर्फ मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, देन यू विल कंटिन्यू. मैंने इस पे एक पूरी सीरीज मैंने की हुई है, सिर्फ वो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में है, उसको सिर्फ कोडिफाई करके उसका एक वीडियो में उसको दे के आना है. वो एग्जैक्टली यही बात है जो आप कर रहे हैं कि व्हाट इज योर मोरल डिसएग्रीमेंट टू एनीथिंग दैट यू अपोज. यू हैव टू हैव अ मोरल premise and that has to be better than my moral premise. तो उसमें फिर जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो थे, ये तकरीबन सारे के सारे मान गए थे कि जाती फायदे के लिए मर्डर करना, उसमें भी कोई मॉरल प्रॉब्लम नहीं है, और इंसेस्ट भी कोई बुरी चीज नहीं है. बिकॉज there is, I mean, as an atheist you don't have any, you cannot have any disagreement to that, क्योंकि उसके लिए आपको फिर जरूरी है कि आपके पास एक मोरालिटी हो, और वो मोरालिटी किसी चीज में ग्राउंडेड हो. इट्स नॉट ग्राउंडेड इन योर जीन्स, दैट मच वी नो. तो उसमें लॉरेंस क्राउस का वीडियो जो हमजा सोर्सेज के साथ जो डिबेट में था, वहां से काम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मेरी हर सैटरडे को लाइव स्ट्रीम होती है जिसमें एथियस्ट वगैरह आते हैं. अब तो खैर काफी कम हो गए हैं. तो रिपीटेडली इनके लोगों ने आके मेरे क्वेश्चंस के जवाब में यही कहा कि हम यहाँ पे खड़े हैं. तो यूर एब्सोल्युटली राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल अबोरेंस सिंपली डज नॉट एंड कैन नॉट अप्लाई टू देम. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन कीजिएगा. Yeah, like exactly. और दूसरी बात ये कि so when I first heard about the whole grave, जो वाक्य हुआ, my first reaction was not to say कि oh, this is misinformation, you're like this is something, you're just like defaming Islam or whatnot, because they've been doing this for like decades, if not centuries. अगर आप Orientalist tradition को भी देखें, my first reaction was just this surprise कि you're the one who's being outraged at an act which is something that has been accepted, and not only by the top intellectuals. लेकिन अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल जर्मन नहीं कुछ साल पहले जर्मन एथिक्स काउंसिल ने ये मतलब आई थिंक कुछ प्रपोजल पेश किया था कि इंसेस्ट को लीगलाइज किया जाए. इमेजिन इफ अ मुल्ला हैड सेड कि यू नो व्हाट, वी शुड लीगलाइज, वी वांट टू लीगलाइज, मतलब इस्लाम में, इस्लाम की वर्ल्ड व्यू से नेक्रोफिलिया इज नॉट समथिंग एबहॉरेंट, इट्स समथिंग दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. Like, just imagine the outrage by Haris Sultan posting pictures of a guy with a beard, and so it's just this inconsistency. तो जोसेफ मसाद की किताब है इस्लाम एंड लिबरलिज्म, तो उसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस है. वो कहते हैं कि द वेस्ट इज एवरीथिंग दैट दे अक्यूज मुस्लिम्स ऑफ, एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स. अगर आप उनकी जो एक्यूजेशंस को देखें विद रिगार्ड्स टू एंटी डेमोक्रेसी या मिसोजिनी वगैरह, you will find, अगर आप वेस्ट की हिस्ट्री को देखें, so all of these things were and still are a reality. अगर आप एंटी डेमोक्रेसी को देखें, so they have their whole tradition. अगर आप यूएस की हिस्ट्री को देखें, which is like the champion of human rights, so their history is divided into two halves. One is characterized by racial slavery and chattel slavery, where women had no rights, और दूसरा half is characterized by a racial apartheid state, जो आज भी है. So again, like they, so और ये जो अभी हुआ है, like the whole outrage at necrophilia, this is a recent example that shows that the West is everything that they accuse Muslims of, including their minions in the Muslim world. So that just I just want to share that. Or one thing, this is the last thing that I'll share, and I'll leave. Okay, Muslims should realize that like the irony of this whole this phenomena is that they are using our morality against us. मतलब वो हमारे morality को use करके हमें कह रहे हैं कि this is something abhorrent and you should condemn it, when on their moral worldview it is not even it is not even wrong. So बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, यूर एब्सोल्युटली राइट. उसका हमारे पास बहुत से एविडेंसेस मौजूद भी हैं, कन्वर्सेशंस में एविडेंसेस मौजूद हैं, इन देयर राइटिंग एविडेंसेस मौजूद हैं. रिचर्ड डॉकिंस की आगे आपने बात कही, या श्योर, आई थिंक ही वाज वेरी क्लियर कि अगर दो बहनें अगर आपस में इस तरह का कोई रिलेशनशिप रखना चाहें तो क्या इसमें क्या गलत बात है. एंड हिज क्वेश्चन वाज, हिज आंसर वाज, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं भी समझता हूँ इसमें कोई गलत नहीं है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट इम्प्लाइड. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मोरल एब्हॉरेंस, आई मीन मोरालिटी इज नॉट समथिंग व्हिच इज which they can. और मेरे बहुत से जो डिबेट्स वाले एथियस्ट से होती हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि लोग,
जस्ट डोंट टॉक अबाउट मोरालिटी। हारिस सुल्तान का भी आपने नाम दिया। कोई साल हो गया, डिबेट करो मेरे साथ, डिबेट करो, फाइन सर, ओके फाइन, लेट्स हैव अ डिबेट। एथियस्टिक मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी। तो उसका पहला जुमला था कि नहीं, एथियस्टिक मोरालिटी नहीं होती है, मैं सेकुलर मोरालिटी से बात करूंगा। आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, बट आई हैव अ क्वेश्चन। दिन रात आपको टैं टैं करने की जरूरत ही क्या है? इस्लाम, हाउ डू यू नो कि इस्लाम गलत है इफ यू डोंट हैव एन एथियस्टिक मोरालिटी? हाउ डू यू नो समथिंग इज रॉन्ग देन? द मोमेंट डिबेट की बात बनी है और आपका पहला जुमला ये है कि नहीं, मैंने एथियस्टिक मोरालिटी की बात नहीं करनी बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। वेल, इफ इट डजंट एग्जिस्ट, तो कीप योर माउथ शट देन। हाउ डू यू नो समथिंग एल्स इज रॉन्ग? एनीवे, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इट्स प्लेजर। अच्छा, माइक की रिक्वेस्ट काफी ज्यादा है। आई प्रॉमिस एवरीवन कि मैं बिल्कुल माइक दूंगा। थोड़ी सी अगर ताखीर हो जाती है तो सॉरी, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इस तरह का है। सो प्लीज बेयर विद मी, आई विल सर्टनली गेट अराउंड टू योर सेल्फ। बिलाल, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, कहिए बिलाल। जी बिलाल, आपने खुद को म्यूट कर लिया। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? Sir, I'm क्या not सब? listening to him. मैं आपसे पूछने लगा था, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक बिलाल साहब की तरफ से कोई इशू है, आई बिलीव। नहीं आ रही सर। अच्छा, ओके, नाउ वी हैव अ डिलेमा। हसन बाजवा साहब अब स्पीकर के तौर पे तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अब अगर मैं उनसे पूछूं कि आप वही हैं, तो अगर वो नहीं भी है तो कहेंगे मैं वही हूँ। सो आई थिंक लेट्स हैव बाजवा साहब ऑन हाँ, बोर्ड। चलें देखते हैं बिलाल भाई जी को जी। रिकनेक्ट होना चाहिए ताकि वो जस्टिफाई कर लें यार। नो नो, दैट्स फाइन। जी हसन बाजवा साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? Gee, thank you very much for allowing me into this space, and I can assure इट्स अ you प्लेजर। that I am indeed the Hassan Kilde Bajwa. एक ही हैं जहां तक मुझे मालूम है। इस आवाज में और इस लहजे में और ये वाली बातें जो मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि कम लोग ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू कम इट्स अ हियर। प्लेजर। आई कैन वेल थैंक यू वेरी मच। लुक, वाज़ेह तो मुझे यही हो रहा है कि एक तरह का मुझे यहाँ पे एको चेम्बर सा नजर आ रहा है। ऑब्वियसली द पीपल हु आर हियर एंड डिबेटिंग विद यू आर पीपल हु ऑलरेडी have agreed with what you're saying. But now, one thing the last speaker said that immediately caught my attention, कि आप मुझे महसूस ये होता है कि आप लिबरल्स को जज करते हैं by the base on the basis of what do Western white men say about liberalism. अब the same question कि भाई according to your morality necrophilia is not wrong, so why are you getting outraged? Well, then I could also because your great thinkers say that it's not a big problem. I mean, the so-called great thinkers with millions upon millions of followers in the Muslim world, like Osama bin Laden, uh, 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 advised and promoted the idea of murdering innocent people for the sake of religion. Does that outrage you? I would assume it does, because you do not strike me as the type of person who would condone senseless violence against innocent people. Yep. But does that justify you being judged wholesale? कि भाई आपको क्या मसला है? Why are you getting annoyed with the drone bombings and the senseless slaughter of the people in Iraq when your own thought leader clearly says it's totally fine? Okay. Do you understand? Clearly, I'm sure that you would disagree with that perspective. So this idea that somehow or the other, every liberal thinker in Pakistan, every liberal thinker in the Muslim world, that they're somehow or the other beholden to what some white man decades or centuries ago said, that's simply a massive misrepresentation, mischaracterization of their thinking. और ये बड़ा एक इजी सा, जैसे कहते हैं ना, वे आउट हो जाता है कि नहीं यार तू तो किसी गोरे के पीछे लगा हुआ है, तेरी बात मानने या सुनने की जरूरत ही नहीं। What do you think, sir? ओके, मैं बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं शेर शाह साहब अगर मौजूद है तो मैं चाहूंगा कि वो भी आके इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज़ अल्टीमेटली आई थिंक यू रिस्पोंडिंग टू हिम, बट मैं द फैक्ट आपने उनको ले लेता हूँ वर्ड सर। जी जी बिल्कुल, आप उनको लीजिए। मैं ब्रीफली में रिस्पॉन्ड करूँ, इसलिए कि हसन साहब ने कहा कि कुछ मेरे मोस्ट पीपल एग्री विद मी, सो यस वी आर ऑन अ फेयरली सेम वेवलेंथ। जहां तक मेरा ताल्लुक है कि क्या मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो लिबरल है ये वाइट मैन की सारी बातों को मानता है,
वेल यस एंड नो. अगर आप मेरी ट्विटर बायो पे देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट क्रिटिक ऑफ एथीज्म एंड लिबरलिज्म, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली पाकिस्तान वर्जन. मैं अपनी पॉडकास्ट में भी ये कह चुका हूँ, मैं टीवी अपीयरेंसेस में भी कह चुका हूँ, अपने लेक्चर्स में भी कह चुका हूँ कि मुझे पाकिस्तानी लिबरल्स की समझ नहीं आती है, बिकॉज दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट लिबरलिज्म इज. इसके बावजूद वो खुद को लिबरल भी कहते हैं और करते हर वो मुमकिन चीज है जो इनको जो अकल इनकी जो इंपोर्ट होती है वो वेस्ट से ही होती है. एंड दिस मच आई एम एब्सोल्युटली श्योर. दैट इज व्हाई आई आल्सो गेट कंफ्यूज्ड कि इनको पता भी नहीं है कि लिबरलिज्म क्या है, लेकिन इसके बावजूद सारे आइडियाज इनके कोई भी जेन्युइन ओरिजिनल आइडिया नहीं है. जो चीज वेस्ट में आज ठीक है वो इनके लिए आज ठीक है, जो वेस्ट में कल ठीक होगी वो इनके लिए कल ठीक हो जाएगी. एंड आई कैन गिव यू नंबर ऑफ एविडेंसेस. But that's a generalization similar to the generalization people would make, I believe, unfairly about you, that clearly you must also support suicide bombings because thought leaders within the faith to which you subscribe believed that was completely legitimate, with millions upon millions of followers who also say it was completely legitimate. Philosophical. हसन साहब, जी सर, जी कहिए. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बारी कर ली, आपको नंबर दे दे तो फिर वो जरूर बोलेंगे बाद में. राइट. मैं हसन साहब की बात से एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है कि ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन एक फ्लोर्ड प्रेमिस पे बेस्ड है, और वो ये है कि मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट करता हूँ. वेल इफ यू रिमूव दैट पार्ट, नन ऑफ एवरीथिंग जो आपने कहा है, नन ऑफ दैट इज वैलिड. हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हम दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहते हैं, पर इफ द सेम थिंग इज डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट तो फिर दहशतगर्दी को दहशतगर्दी ही कहना चाहिए. सो व्हाट वी एंड अप विद इज कि हमारे यहाँ दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाता है, वेयरएज वहां पे दहशतगर्दों को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहा जाता है. सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम फॉर द टाइप ऑफ सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस दैट वी हैव. That's number one. Number two. But you're assuming that people who are liberals accept necrophilia according to their moral worldview. No, that is not the point. शेर शाह साहब का ये point नहीं था. उनका ये था कि that they cannot have any disagreement with it based on the fact कि वो morality को accept नहीं करते हैं as a feature which exists outside humanity or something or an external agency to which we subscribe and morality comes from there. वो इस चीज को कहते हैं, और उन्हें एग्जाम्पल्स दी हैं. एक आदमी कहता है कि मैं रिचर्ड डॉकिंस को ठीक मानता हूं और उसकी वजह से मैं इस्लाम छोड़ने को तैयार हुई, मैंने छोड़ दिया है. आई बिलीव इन इवोल्यूशन एंड आई बिलीव इन एवरीथिंग ही सेज. देन द सेम पर्सन टेल्स हिम दैट लुक, आप जो अगर आप इंसिस्ट करते हैं दैट्स परफेक्टली ओके. एट द सेम टाइम एक आदमी कहता है कि मैं नथिंग की डेफिनेशन लॉरेंस क्राउस से सीखता हूं और हर वो चीज जो कह रहा है वो ठीक है, एंड द पर्सन इज विलिंग टू गो एज फार एज लिविंग द रिलीजन. तो फिर जब क्राउस ये कहता है कि वेल बहन भाई आपस में सेक्स कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो मोरल अबोरेंस टू इट, देन उस लोगों से हमारा ये सवाल है कि जिन लोगों को देख के आप हमें गलत समझते हैं, वो लोग उस चीज को ठीक समझते हैं जिसे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सो नो वन इज सेइंग कि उनको ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. हम ये कह रहे हैं कि दे डोंट हैव एनी मोरल ग्राउंड टू से इट. दैट डजंट टेक देयर राइट अवे फ्रॉम देम टू से इट. ऑफ कोर्स दे कैन से इट. लेकिन अगर they don't have some white man to validate what they're saying or an external person to validate what they're saying. That does not mean they're devoid of morality. Yeah, sure. Give me one thing that they have learned from Africa. I'm going to give you 10 that has come from white men. Go on. Well, for instance, the idea of racial equality. That's not exactly the white man's invention now, is it? Fight against apartheid. Fight against apartheid is very clearly an African invention, don't you think? A lot of the thinking amongst liberals right now is dominated by the global South, because they're focusing very much on ideas of decolonization. They're focusing very much on the ideas of economic equality. They're focusing very much on a lot of the criticisms that you're leveling against the West also. तो ये कहना कि पाकिस्तानी लिबरल होते हुए that you are subscribing fully to the worldview as presented by a bunch of old white men, that is simply factually incorrect, because Pakistani liberals do not think that way. Yes, there are certain elements that they pick up, just as there are certain elements that you pick up from, for instance, I've seen amongst a lot of your followers, they tend to be very fond of Stephen Crowder, Matt Walsh, the Republican right wing that have this very faith-based perspective. वो वहां से तो उठा लेते हैं, वही arguments पेश करते हैं. So, I mean, I can show you 10 things that people who are subscribing to your worldview are importing from the white men.
हाँ साहब, इफ यू अलाउ मैं आपका बात को रिस्पॉन्ड कर दूं। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे एक चीज बताएं जो हमारे देसी लीडर्स ने अफ्रीका से सीखा हो। आपने कहा कि रेशियल इक्वालिटी, वेल टू स्टार्ट विद देयर इज नो सच थिंग एज रेशियल इक्वालिटी, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के देसी लिबरल के पास कभी ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं इनको मिला जहाँ पे रेशियल इक्वालिटी को ये अप्लाई कर सकें। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में काला गोरा, ये इसकी नेचर वो नहीं है जो वेस्ट में काले गोरे की है। सो दैट इज, आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि आप इस आर्गुमेंट से क्या साबित करना चाह रहे हैं। नंबर टू, जो आपने कहा कि ये डीकोलोनाइजेशन और ये वगैरह, वो कोलोनाइजेशन कहाँ से आई थी? और आज तक दुनिया में कोलोनाइजेशन नहीं है। डू यू थिंक अमेरिका के जो 750 से ज्यादा फौजी अड्डे हैं दुनिया में, ये अमेरिकन एम्पायर और अमेरिकन को जो द आइडिया ऑफ कोलोनाइजिंग द वर्ल्ड है, ये उसका हिस्सा नहीं है? मैं आपको देसी लिबरल्स के एक एक चीज, इवन शादी के हवाले से, मेरा जिस्म मेरा मर्जी, ये ब्राजील से आइडिया नहीं आया हुआ था, ये आइडिया वेस्ट से आया हुआ है। ये ट्रांसजेंडरिज्म जो ट्रांसजेंडर राइट्स और ह्यूमन राइट्स, ये नारा अपना चैड से नहीं आया हुआ या कोंगो से नहीं आया हुआ, ये अमेरिका से आया हुआ है, ये यूके से आया हुआ है। मेक अ लिस्ट, एक एक जितने भी इनके प्रोमिनेंट स्लोगन्स हैं सबको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इनके रूट्स कहां से हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, दे डोंट अंडरस्टैंड माय बॉडी माय चॉइस का असल में मतलब क्या है, दैट इज वन थिंग। लेकिन ये लेके वहां से आते हैं, No, they इनके don't हेयर understand what स्टाइल you से think it लेकर means. इनकी, They know what it नहीं means. They don't नहीं understand नहीं, what you think it means. They understand what they mean by it. Have you एंड हाउ bothered डू to यू, hear what they mean? श्योर, हाउ डू यू नो दैट आई डोंट नो, या ये मेरा ख्याल है, हाउ डू यू Well, for एग्जैक्टली नो instance, दैट? because it's obviously clearly you're referring back in the 70s when it was the main slogan for the abortion, the rights to abortion movement. Whereas when you talk about it to मेरा any मैंने of आपसे the हसन साहब ये नहीं organizers of the पूछा, मेरा सवाल नहीं आपसे ये तो नहीं मैं है। आपने तो एक ठीक है कैटेगोरिकल स्टेटमेंट एक दी है हाँ कि ये मेरा ख्याल है। मेरी आपसे आज जी पहली दफा बात हो रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये, बिल्कुल आपका ये क्यों ख्याल है कि मेरा ये सिर्फ ख्याल है? because if you understood what Mera Jism Meri Marzi was about, you would understand it's a matter of women's health. It's a matter of fundamental agency of every human being, men and women. That Again, is that what is is not, meant, and that is what has been repeated again again and that again is and not my again. question, that is not my question, and deflection will not take you far sir। मैं ये काम रोज करता Okay, हूँ। मेरा ठीक आपसे है, सवाल ठीक ये है, है ठीक कि है. जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट Okay, आपकी है कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है, व्हाई डू यू थिंक ये मेरा ख्याल है, जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा सोर्स ऑफ मेरी इंफॉर्मेशन नहीं, मेरा you know सोर्स ऑफ what? नॉलेज क्या है। Correct me when I'm wrong. Please go ahead. आई एम करेक्टिंग यू सर। मैं पाकिस्तान के देसी लिबरल से ऑलमोस्ट हर वीक बात करता हूँ, मैं इनसे टेलीविजन पे डिबेट करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज में इनसे डिबेट करता हूँ। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, दैट इज हाउ आई नो कि वो नहीं पता। आपको पता है कि मैंने कितने देसी लिबरल से पूछा है कि आप लिबरल हैं, वो कहते हैं हाँ लिबरल हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि व्हाई डोंट यू अप्लाई रोसो स्प्लिट कॉन्शियस थ्योरी इन सोसाइटी, उनको पता भी नहीं होता कि वो आगे से कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्प्लिट कॉन्शियस थ्योरी है क्या। दे हैव नो आइडिया। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे देसी लिबरल्स को नहीं पता कि लिबरलिज्म की असल में रूट कोज क्या है, असल में वो उसकी रूट्स क्या हैं, असल में उसकी इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए आपको किस तरह के माहौल की जरूरत होती है और उसका डिक्लाइन कहां पे आता है। दे हैव नो आइडिया, एंड वन ऑफ द रीजंस दे हैव नो आइडिया इज कि ये अभी तक जॉन लॉक, रूसो रोजो सारे बड़े अच्छे लोग हैं, नो डाउट, लेकिन उन्होंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो वो इन मेनी वेज उस जमाने का जो चर्च का पैराडाइम था, तो वो लोग खुदा को मानने वाले थे। लॉक इज वेरी वेरी क्लियर कि जो खुदा को नहीं मानता उसके कोई हकूक नहीं होते, एंड सो फोर्थ। लेकिन वो उस जमाने में अच्छा लगता था जब लोग चर्च से आजादी चाह रहे थे। 200-300 साल के बाद हमें ये नजर आ रहा है कि लिबरलिज्म की वजह से वेस्ट में आबादियां खत्म हो रही हैं, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे हैं कि दे डोंट हैव अ लेबर मार्केट। हर कुछ अर्से के बाद इमिग्रेशन खोलने के बाद करने के क्या कर पड़ता है उनको, फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप होते 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 1.1 तक चले गए हैं, वेयर एज 2.1 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये सारे का सारा लिबरलिज्म है जिसे तबाह करके रख दिया है, और रिवॉल्ट के तौर पर वहां पे पॉपुलिज्म का राइज हो रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे देसी लिबरल्स को कुछ नहीं पता सिवाय इन चीजों को। उसको ये पता है कि लिबरलिज्म मींस अय्याशी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शराब ये वो, और ये नहीं होता No, that's लिबरलिज्म। your दीज definition, आर द sir. That's your इम्प्लीकेशन, definition. That's what इट्स you've देयर। decided that's what it means. But I नहीं can tell नहीं, you, as a फिर वही desi बात, liberal, that is मैंने not at आपको all, इतनी not तफसील at all. से, मैंने आपको हसन साहब इतनी तफसील से बताया है, एग्जांपल्स दे के बताया है कि मैं इसलिए समझता हूं कि देसी लिबरल्स को लिबरलिज्म का नहीं पता। उसके बाद अगर आपकी फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि दैट इज व्हाट यू थिंक, देन आई डोंट रियली थिंक कि मुझे अपना टाइम मजीद जाया करना चाहिए इस पे। व्हाट डू यू थिंक? चलिए ठीक है. Actually, let me then ask you. अब you brought up मेरा जिसम मेरी मर्जी. I know exactly where this has started, and I know also exactly what the objective is of presenting this as a slogan and why they hold on to it. Yeah. Why is it that you would disagree with their premise that a human being has the right to agency over their own body? Just as an Because example, because that is what it means to a desi liberal. नहीं, देसी लिबरल का मतलब, देसी लिबरल को इससे, अगेन हियर इज अ थिंग, आप 10 देसी लिबरल से पूछे ना कि मेरा जैसे मेरी मर्जी का क्या मतलब है, आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू आपको 6 डिफरेंट जवाब मिलेंगे। तो आपको कपड़ों के Sounds बता रहे होगा, that एक sound आपको like प्रेगनेंसी के बता रही होगी। sir,
like a नहीं sweeping. ये ना, That sounds like a sweeping statement. एंड यू रॉन्ग अगेन, बिकॉज ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इन लोगों से दी है। इस दफा भी औरत मार्च में मेरी पूरी टीम गई थी कवर करने के लिए। सो यू रॉन्ग अगेन सर। Again, आप कह रहे हैं कि you asked 10 desi liberals that what it means, then that's why I'm asking you, on what basis is it that you are making this statement that it means Ayashi? That it means Ayashi. या Fahashi, whichever term you prefer. ये आपको देसी लिबरल्स मिल जाएंगे जो कहेंगे वो मेरा जिसम है, अगर मैं अगर शादी नहीं करना चाहती, इट्स अप टू मी, अगर मैं किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ, यू विल फाइंड दीज आंसर्स, नॉट माय आंसर, यू विल फाइंड दीज आंसर्स अमंग देसी लिबरल्स। आपको इससे ज्यादा मैच्योर जवाब मिल जाएगा। Yes, just as you will find some answers that will justify suicide bombing. Right. So that now the problem here is, Qaiser Sahab, I understand that you have a faith-based perspective, and honestly, I respect people for having that faith-based perspective. And what I'm here to do is that I'm challenging this narrative that you are presenting about this monolithic desi liberal, which I'm telling you is fundamentally incorrect, just as incorrect as anywhere in the West, Islamophobes, any number of morons speak about Muslims as some sort of monolithic unit. अब आप बात कर रहे हैं that desi liberals don't know what they're talking about, और वो गोरों ने उनको अपना पूरा way of thinking उनको दे दिया है, but that's simply not correct. And you're not engaging with them from a perspective of understanding. मैंने जब ये क्लेम किया हसन साहब, तो मैंने आपको कई एग्जांपल्स दी हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। और एक बात मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना कि मेरा एक फेथ बेस्ड पर्सपेक्टिव है, ट्रस्ट मी, सभी का फेथ बेस्ड पर्सपेक्टिव ही हुआ करता है, इंक्लूडिंग योर ओन गुड सेल्फ। आपका भी एक फेथ बेस्ड पर्सपेक्टिव ही है, बिकॉज वी डोंट हैव द एम्पिरिकल टूल्स के हम दुनिया की हर वो चीज जिसको हम ठीक समझते हैं उसको हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। एवरीबडी हैज टू एम्प्लॉय सम काइंड ऑफ फेथ इन समथिंग। बाय यू आप जब कहते हैं कि मेरा फेथ बेस्ड है कि मेरा इस्लामिक है, और एब्सोल्युटली इस्लामिक है, एब्सोल्युटली आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई हैव एब्सोल्युटली नो, आई हैव नथिंग टू अपोलोजाइज फॉर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फेथ बेस्ड I certainly don't think you should. I certainly don't think you should apologize either. Sorry, I'll have to intervene. We have a lot of requests, sir, and मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा टाइम इनको दे रहे हैं, तो उनको अच्छा, भी टाइम देना चाहिए। शाह साहब, मैं सिर्फ शेर शाह साहब को मैं चाहता हूँ कि कंक्लूड वो कर दे, इसलिए कि एक्चुअली हसन साहब का जो डिसएग्रीमेंट था वो उनसे था, मैं तो मेरे ख्याल में वैसे ही बीच में बहुत सी बातों में बातें कह गया। शेर शाह साहब ट्राई कीजिएगा इसको जितना जल्दी कंक्लूड कर सकें, देन श्योर देन वी मूव ऑन। गो ऑन। ओके, शेर शाह शॉर्टली कर ले प्लीज। I'll keep it short. First thing, Hassan Saab mentioned generalization. I think you made like a lot of generalizations about liberal, desi liberals here in this conversation. You are saying you keep saying that desi liberal ऐसा नहीं सोचते, desi liberal ऐसे नहीं सोचते, as if you're already generalizing कि desi liberal एक मतलब उनकी जो सोच है वो बिल्कुल एक ही जैसी है. Which goes against the whatever the Muslims are saying about them. दूसरी बात ये कि you mentioned Osama bin Laden. You're sort of insinuating that he's like some Muslim figure. He's like somehow praised by Muslims, which is not true. He has been denounced and condemned by almost every Muslim. Major scholars have come out, and he's on the record saying कि जो killing of the innocent का जो phenomena है, he openly said कि this is something that we don't find in Islam, but I'm doing this for pragmatic reasons, और मैं इसका reference भी दूंगा maybe in the chat. और तीसरी बात ये, this is the problem that I have with like every time I have a discussion with a liberal on this issue, कि when I'm talking about liberalism, I'm talking about the tradition, the philosophical tradition. So liberalism is a political and moral tradition that started with John Locke. तो जब मैं लिबरलिज्म की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ट्रेडिशन, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैंडेविल, जॉन रॉल्स वगैरह वगैरह. And yes, your entire ideology comes from a white man. It has been defined by a white man. It has been improved by a white man. हाँ, अभी recent times में अभी साउथ से बहुत सारे liberal for me it's Baba Bulle Shah. Their entire worldview, please let me finish the point. Their entire worldview is just a derivation of what white men said in the 17th century, in the 18th century. आप जब यहाँ पर लड़कियां जब जेंडर स्टडीज की डिग्री लेती हैं, तो वो कौन सी किताब पढ़ती हैं? They read Mary Wollstonecraft, the first feminist who was also a white supremacist. They read Simone de Beauvoir, who was also a rapist, by the way. तो आप white women को ही पढ़ते हैं, आप white men को ही पढ़ते हैं आप. और मैंने और दूसरी बात ये मोरालिटी की जो बात हुई कि देसी liberals have no morality वगैरह. My point, I think I already made that very clear कि
they Desi liberals, atheists, ex-Muslims. I was talking about all of them, not just Desi liberals. I'm saying कि they are using Islamic morality against us. क्योंकि Islam में हमें definitely कहा है कि you cannot have sex with an animal, and if this is the case, then the man and the animal has to be killed, वगैरह, right? Same thing for incest, वगैरह. The thing is that they are using our morality against us. और उनके secular liberal worldview में ये ऐसा नहीं है. मतलब bestiality हो गई, necrophilia is something that is accepted. और उनके top philosophers को मैंने quote किया, Peter Singer, Dawkins और Lawrence Krauss और दूसरी बड़ी general public में भी अभी necrophilia वगैरह, this is something that has been accepted on a general level too. Or maybe in the next, maybe like 10 years into the future, the West will force Muslim countries to make sure that necrophilia is not condemned, to make sure that necrophilia is not outlawed, right? Just like this is the same case with LGBTQ and homosexuality as well. It was outlawed in the West in the 1916, लेकिन उनके बाद जब उन्होंने legalize किया, फिर they started pressurizing Muslim countries to legalize it. In the same way, necrophilia, bestiality, incest वगैरह, ये भी हम पर ये force करेंगे कि हम इनको legalize करें. So I don't think I said anything wrong. I think all of that is true. Your ideology is defined by white men. It has been improved by white men. But I mean, it's very nice. Again, I wish I had the crystal ball that you clearly possess. But again, I think I define where my ideology comes from, not anyone else. No, I'm talking about the tradition of liberalism. This is like, I'm not talking about liberalism like some the whole point of liberalism. Yeah, but the whole point of liberalism is that it evolves over time. It is a matter of critical thinking, looking at the situation that you're in now. So when it is a Desi liberal, exactly. a Desi liberal is working based on the fundamentals that he gains from the environment in which he is born, or she is born, or they are born. So when we are talking about Desi liberals, we're not talking about people who are beholden to what some white man wrote 200 years ago. We're talking about Desi people who are working, who are growing up in this society, witnessing what is happening in front of them. And yes, they do on occasion, just as you learn maths or any other political philosophy, you look at what is being presented other places and you utilize that language if that language does not exist within your own society. But to say that you automatically become beholden to someone because you have... You're making a generalization about Desi liberals. Wasn't this something that you were complaining about a few minutes ago? I don't think that all liberals. I'm trying to give you a more nuanced view of what Desi liberals can be. You are the entire premise of this discussion has been that Desi liberals are some sort of monolith, man. That's the whole point. I'm telling you that they are to assume that just because they have read certain books by white men from 200 years ago does not automatically make them beholden to a worldview that accepts necrophilia as something acceptable. Why does one thing lead to another? That is a silly generalization. I'm telling you that there are multiple other ways in which they are interpreting their world around them, putting on various different filters, including, by the way, the religious filter. There somehow the other is an assumption that it is utterly impossible to be a believing Muslim and have a liberal worldview. But to people who consider themselves believing Muslims and have a liberal worldview, that is the reality. थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से आ रही है. I'm not entirely sure कि आपने शायद कुछ ऐसी बात कही कि हम ये कह रहे हैं कि it's not possible to be a Muslim and be a liberal at the same time. शायद कुछ आपने ऐसा कहा? Yes, because I absolutely say that because that is their self-identity. They perceive themselves as being Muslims. That is where their religious roots lie. That is how they perceive themselves. They pray, they fast, they fulfill. I would wager at least as many of the precepts of being a Muslim as you yourself do, or other Muslims who are participating in this conversation. But they are also able to say that this is not an antithesis to being having a liberal mindset. It is in fact supporting a liberal mindset. No, why are they not? Again, that's you don't. I mean, you do not have a monopoly on people's identity. They get to define their own identity. You get to define your identity as a Muslim. Okay, I get it. So why do they not? I get it. I don't have any rights to define them, right? As you say, I don't have any monopoly. I don't have any authority. But guess who does? The Almighty. The Almighty.
अगर कुरान में ये लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल एक चीज पे लेजिस्लेट कर दे तो किसी मोमिन मर्द और मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि वो अपनी डिस्क्रेशन को यूज करे, वो दैट टेक्स योर लिबरलिज्म अवे फ्रॉम यू. अब आपके पास दो चॉइस हैं, यू आइदर No, बी द मुस्लिम but you और यू see, डोंट बी द मुस्लिम. that takes व्हाट it यू डोंट no, गेट टू डू, नहीं Kaisa मेरी sahab, बात सुनो, मैंने आपकी that बात takes it away from बहुत देर you, not from them. हसन साहब, बहुत देर